Good morning student, how are you? I hope all will be well. Today we will do practice of chapter 1. This is your revision class. Okay, so we will practice of chapter 1. Do you know student, in chapter 1 has a many question. So first of all we will start from numbers name. Do you know about your numbers name? Yes or no? Okay, if you know, very good. If you don't know, so we will practice of blackboard. Listen first student. Suppose here I have given here 3 digit. Suppose I have given here this type 3 digit. Okay. My question is write the numbers name. My first question is write the numbers name. Okay. My first question is write the number name. Listen student, I have given here 3 digit. Okay. Listen, first of all you have to keep in your mind, if we do add, if we do subtract and if we do multiply, we will start from that ones place. हम one place से start करते हैं. तो बेटा you have to keep things in your mind, starting like suppose 1 2 3 4 5 6 7, suppose कलो 0 भी, हाँ 8 9. Clear? This number has only one digit. This all number has only one digit. So we will say ones. हम इनको क्या स्पीक करेंगे बेटा? Ones. Okay. Suppose listen 0 to 9. Here we will speak ones. Suppose my next number is 10. Okay. My next number is 10. So do you know 10 number? 10's number have 2 digit. 10's number have 2 digit. So listen. This digit we will say ones and this digit we will say tens. हम speak करेंगे tens. Clear? Got it? So again I am telling you again here. My question is 184. Okay. And here अब like this 10 to 99. Do you know? We will say टेंस. टेंस हो गया आपका ये, ठीक है. लाइक दिस 10 to 99. आपको पता है 10 to 99 हैज 2 डिजिट है इसके पास, तो हम क्या स्पीक करेंगे इसको? टेंस. ठीक है. अब सपोज करो लाइक 100 to 999. क्लियर? दीज ऑल हैव 3 digit. These all have 3 digit. So now we will say 100 have how many digits? 3. So now we will say 100. Clear? फिर again I am telling to you 0 to 9 it has only 1 digit. We will say ones. Like this 10 to 99 it has 2 digit. So we will say like this 10 is tens number. Clear? 99 is tens number. Okay. 99 में जो 9 है वो क्या है? वो टेंस नंबर है ना. ये वाला 9 टेंस नंबर और ये वाला 9 वंस नंबर है. जस्ट नाउ आई टोल्ड टू यू सेम एज इट इज 100. दिस इज 100. हाउ मेनी डिजिट 100 हैव? 3. एंड हाउ मेनी डिजिट टेंस हैव? 2. हाउ मेनी डिजिट टेंस हैव? 2 एंड 100 हैव 3. क्लियर? तो 100 टू 999 तक वी विल से 100. हम 100 बोलेंगे इसमें लाइक दिस. तो सो बेटा लिसन अगेन. सो वी विल से ये सपोज करो आई डन दैट नंबर दैट 4 on which place 4 is sitting ones. Okay. And on which place 8 is sitting tens. Clear? And on which place at 100 sitting 1. Clear? ठीक है. 4 on ones place, 8 on tens place and 1 on 100 place. Clear? So we will do first write the numbers name. Okay, numbers name. Suppose I have given here 199, B 264, C I have given that. Okay, and that type. So you will write here. There, do you know? This is your 100. Listen, how many digit 100 have? 3. Abhi just now I told to you. How many digit 100 have? 3.
आपको बताया था मैंने अभी 100 के पास कितनी डिजिट होती है, 3 डिजिट होती है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल काउंट 1 2 3. तो वी विल यूज ऑफ 100. हम इसमें किसका यूज करेंगे फर्स्ट 100. तो नाउ फर्स्ट इज हियर 1. वी विल राइट 1. सेकेंड 100. लिसन 100. लिसन 99. Okay, 199. You have to write that type. Clear? अब next is 1 2 3 वही 100 number like this 204. There is no we haven't write here tens place. हमने tens place में कुछ भी नहीं write किया. ones place में 4 है. अब tens place में हमने कुछ भी write नहीं किया तो we will not write tens place. हम यहाँ पे tens place नहीं write करेंगे. 100 place is 2 तो we write here 100 place like 204. Clear? 199. Here listen, there is ones place is nothing, tens place is also nothing, and 100 place is 3. So like this we will say 300. Clear? 300. Okay. अब next is my second question is write the numbers. Second question is write the number. Clear? Write the number. And we can say write in figure also. Okay. My first question, suppose I have given 700 756. Listen, 100 place is here 7. Okay, here is 56. So first of all we will complete here tens place. We will write here 56 and 100 place, which is what is this 7. We will put on 100 place 7. Got it? So your digit is 756. This is, you will write that type. Got it? Write. Okay, write the number. Like this I am giving one more example. 804. Listen here. We will write here 8. Here is 100. Keep think in your mind. If here is 100, तो listen. If you are right here any digit, तो your आपके digit में 3 digit होनी चाहिए. Because 100 has how many number? 3. 100 के पास कितने नंबर होते हैं बेटा? 3 होते हैं. तो आपके पास जब राइट इन फिगर करोगे तो आपका इसके अंदर भी आपके पास 3 डिजिट ही होनी चाहिए. क्लियर? लिसन फर्स्ट 800 and here is 4. अब do you know ones place as here 4 and 100 place is here 8 and 10th place is not here. We will put instead of 10 place 0. Okay, so there is 804. You have to write this type of write the number. We can say write in figure also. Clear to question? And second listen. Third question is what come just before. Like my next question is what comes just before. Okay, what come just before. Suppose I have given here 347. So you have to write here, listen, 346. I have given here 480. So like the 80 before is 79. You will write here 479, 346. Listen before. My next question is what's come in between. Next, what comes just between. Okay, suppose I have given here 346. Here is your fill in the blank and I have write here 348. Do you know 346 after what will it come here? 347. Got it? Next I have given here 800. Here is fill in the blank. Here is 802. 800 after 801 and after that 802. Clear? Suppose here
I have given here 840 and I have here write 842. 840 after 841 or here 842. There are what come just between. Okay, and next my question is what come just after. Next my question, what comes just after. Okay, what comes just after. Suppose I have given here 401, so your answer is 402. I have given here 800, so you will write here 801. Okay, I am giving here 99. Do you know 99 after what will it come here? 100. Here like this 900, sorry 199. So your answer is 200. Clear? If I give here 399, your answer is 400. If I am giving here 999, so your answer is 1000. Clear? Okay, so you have to do practice at home. Okay, just now I told to you 5 type of question. First is like this, write the numbers name. Second is write the numbers, and third is what come just before, what come just between, and what come just after. Okay, so you have to practice in your rough notebook. You have to do. Okay, next is put the sign. Do you know? My next question is compare the number. Yes, beta, listen. I am given here 83 and here like is 90. Second 64, here also given 64. One lol. Yes, beta, compare the number. आपको बेटा नंबर को compare करना है. I have given here like this 3 sign, that and that. Okay, so you have to put here sign according to your compare. Suppose it has 183 and it has 196. So do you know which one is bigger? 196. So your answer here mouth. Okay, here is 164, here also 164. Both digits are similar. We will put here is equal to what it. And next here is 346 and here is 300. So which one is smallest? It is smallest. We will put here smallest number. Clear? Okay, there is compare the number. And next question. My next question is, what is the place value? What is the place value of 5? What is the place value of 5? Huh? What is the place value of 5 in each number? In each number. Okay, suppose I am given here 454, 1 and second 524 and third 625. suppose. Listen, what is the place value of 5 in each number? आपको इस नंबर में प्लेस वैल्यू बतानी है 5 की कि प्लेस वैल्यू इस जो प्लेस मतलब ये किस प्लेस पे है. जस्ट नाउ आई टोल्ड टू यू, मैंने आपको स्पीक किया था हियर से जो फर्स्ट डिजिट होती है वो क्या होता है वंस,
सेकंड डिजिट क्या होती है 10 और हियर से थर्ड डिजिट क्या होती है 100। तो आपको इसमें इस क्वेश्चन में आपको 5 की प्लेस वैल्यू बतानी है कि 5 कौन से प्लेस पे है। तो आपको ये 5 आपको डू यू नो आपको पता है कौन से प्लेस पे है, टेंस पे। तो आप इसको राइट करोगे 50, ओके 50 क्योंकि टेंस प्लेस पे है। और आप इसको ऐसे भी राइट कर सकते हो 5 टेंस। क्लियर? हाँ, नेक्स्ट सेम एज इट इज हियर 5 कौन से प्लेस पे बेटा 100। तो नाइट वी विल राइट हियर 500, वी कैन राइट दैट टाइप। आपके बोथ आर राइट, दोनों राइट आपके। आपको पता है 5 किस प्लेस पे है, वंस प्लेस पे है। तो वंस 5 इज 1, 5 का 5 ही होगा क्योंकि वंस में 1 ही डिजिट होती है। और हियर वी कैन राइट 5 वंस। आप 2 टाइप से राइट कर सकते हो, दिस टाइप भी, दिस टाइप भी। ओके, दिस इज योर प्लेस वैल्यू। अब सपोज करो आई एम राइट हियर व्हाट इज द फेस वैल्यू, what is the face value, हाँ what is the face value व्हाट इज द फेस वैल्यू। बेटा फेस वैल्यू हमने पूछा व्हाट इज द फेस वैल्यू ऑफ like this 7 is free सॉरी लिसन बेटा व्हाट इज द फेस वैल्यू ऑफ, आपको फेस वैल्यू बतानी है बेटा 7 की फेस वैल्यू। सपोज करो बेटा फेस मतलब हो गया अपना फेस ही होगा एक तरह से। क्या अपना फेस चेंज होता है? नहीं होता ना, वो हमेशा एज इट इज रहता है। तो सेम एज इट इज बेटा फेस वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती, फेस वैल्यू हमेशा वैसे की वैसे ही होती है। अब मैंने आपको इस क्वेश्चन में पूछा फेस वैल्यू 7 की फेस वैल्यू, तो आपका आंसर इसमें 7 ही होना चाहिए। हम इसमें कुछ भी चेंज नहीं करेंगे क्योंकि हमारा फेस कभी चेंज नहीं होता। 8 की फेस वैल्यू में हमारा आंसर 8 ही होगा, हम उसको कभी चेंज नहीं करते। मैंने आपको बोला व्हाट इज द फेस वैल्यू ऑफ 4, आपका आंसर 4 ही होना चाहिए। मैंने बोला बेटा व्हाट इज द फेस वैल्यू 5, आपका आंसर 5 ही होना चाहिए। मैंने बोला व्हाट इज द फेस वैल्यू ऑफ 8, तो आपका आंसर 8 ही होना चाहिए। ठीक है बेटा, वी हैव कंप्लीटेड सम क्वेश्चन related from chapter 1, so you have to practice also. Okay, chapter 1 clear, those all question you have to practice in your rough notebook. Clear beta, thank you and have a nice day.